Very good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So each one of you, you must have checked your email. I have shared the video links of all the three great personalities which are covered as per your syllabus. I want you all to go through the videos, learn from them, and again revise the notes because day after tomorrow, I'm going to once again conduct the session based on the doubts. So that in case if you have any doubts, in case you cannot understand any of the topic related to the three great personalities, you can definitely let me know. Apart from that, also understand the importance of writing a summary. That is very important because you should know how to write a summary. While writing summary, you should also understand what are the good qualities of writing a good summary, and then how do we write a great composition. All right. So in today's class, as discussed earlier, we are going to discuss about two important things, that is report writing and proposal writing. All right. So first thing that we should keep in our mind is there's a big difference between report writing and proposal writing. जैसे ही proposal का बात होता है, you should always keep in your mind proposals means something that is unique, a new idea, a new thought, even in the existing plan, even in the existing policy जो पहले से चला आ रहा है, उसमें भी जब हम कोई नया चीज बदलाव लेकर आते हैं, or if there is a problem and when we want to provide solution to the people related to that particular problem, we propose, we share our idea, we share our opinion. This kind of writing is called as proposal writing. I repeat, whenever there is a new idea, a new thought, a new process, and you want to bring that new thought, new process into the picture, wherein you want to create that right environment where people can understand what are the benefits of implementation of the new policy, what are the basic benefits of implementing of the new ideas and thoughts, so that the existing problem can be ruled out or existing problem can be eliminated. So keep this in your mind. Proposals are anything which are new, any change, any kind of newness, even in the old existing one. To be very honest, say for example, we all have Android mobile phones. We are using 4G. Very soon, we all are going to shift from 4G to 5G. Now, in order to bring that particular change or in order to incorporate this particular change, हर एक मोबाइल कंपनी को पहले परमिशन लेना होगा ट्राई से, जहां पर उनसे परमिशन लेने के बाद ही वो अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि अब 4G का फैसिलिटी बंद हो जाएगा या 4G एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपको हाई फीचर्स चाहिए, बेहतरीन फंक्शनैलिटीज चाहिए, you should move from 4G to 5G. So keep this in your mind. Proposals are always adding some newness to the old existing ones. All right. So keep this always in your mind. How do we write proposal? Remember the technique IDA. पहले attention grab कीजिए, interest को develop करवाइए, desire generate कीजिए, and finally let the people act according to your ambition. So the moment once when we talk about proposal, even in proposal, the same IDA technique is applied. So how do we grab the attention of the reader whenever we are creating the proposal? That the newness that is existing, or the product, how the product is going to help the people, how the services will benefit the users or the end users, that is customers or the consumers. This you have to highlight because this is the main attractive point which is going to grab the attention of the user. So हमेशा पहले याद रखना है, जब भी हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमारा पहला पैराग्राफ क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जैसे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो सके, आप लोगों के या रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सके. Second paragraph would be related to interest, because if yes, you have attracted the audience, but if they don't show up the interest, there won't be any desire and action. So therefore, how do we generate that interest? How do we add on some benefits, some advantages, so that people can understand the end users of that particular product? हमेशा याद रखें, पहला पैराग्राफ लोगों के ध्यान को आकर्षित करते हुए होगा, वहां जो बेनिफिट्स होने वाले उनको हम हाईलाइट में बताएंगे. सेकेंड पैराग्राफ होगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेनिफिट्स, what are the features, what are the benefits, how this is going to bring change in the user's life.
So you should always remember paragraph 2 would be related to detailed explanation of the advantages, benefits, and the features. The third paragraph, what benefit people are going to get if they apply this particular policy, if they apply this particular rule, if they apply this particular proposal immediately. अगर immediately आपके proposal को accept कर लिया जाए तो उनको कौन सी benefits मिलने वाली है, आपको इस पॉइंट को थर्ड में दिखाना है क्योंकि ये डिजायर जनरेट करेगा. फाइनली जो कंक्लूजन होगा वो होगा उनके एक्शन से रिलेटेड. So always keep this in your mind whenever we talk about proposal. Proposal हमेशा डाइसी होता है. डाइसी का मतलब लोग इसे एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी. So always remember whenever you are going to give the proposal, proposals may be accepted or rejected. Many a times you have to change your proposal. For example, you have designed something. जब आपने किसी क्लाइंट के पास उस प्रपोजल को प्रेजेंट किया और उनको लगा कि थोड़े से चेंजेस करना जरूरी है तो आप हिचकिचाओगे नहीं. यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट, यू शुड ऑलवेज से दैट ओके फाइन, इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, if there is any customization that is to be done, we are ready to customize our proposal. These are common things whenever you are creating any proposal you should keep in your mind. Point 1, the technique that is applied is IDA. Point 2, you should always remember that proposals are those which could be accepted or rejected. If you are designing any proposal, it doesn't mean जो आपने दिया वो 100% उसी तरह से लोग accept कर लेंगे. No, may not be possible. I'm using the word may. Sometimes people may accept it, sometimes people may not accept it. So therefore, you should always keep yourself ready to bring changes in your proposal. All right. So keep all these points in your mind whenever you are writing proposal. Why? Because proposal is very, very important. Any change that is happening, even in your personal life, would be based on certain proposal. So proposals are very important, particularly from the segment of your studies. Once when you are entering into professional career, every now and then you will be asked to propose new ideas, new thoughts, and that newness will add more value to your professional career. So when we talk about proposal versus report writing, proposals are something where you are trying to implement something new, whereas report is always written after the event, after the activity is completed, after the finishing of certain course of action. So always remember reports are those wherein maybe there are certain diagnostics that are being done, there was certain investigation that was being conducted, there were certain analysis that was being done, there were certain routine actions that you were following, and based on that routine action you have designed a report. So report is always at the end of the event. जैसे प्रपोजल में बताया गया है जब भी कोई नया चीज इंप्लीमेंट होता है तो आप परमिशन लेते हैं, आप प्रपोज करते हैं अपने आइडिया. रिपोर्ट क्या होता है? किसी घटना, किसी इवेंट के बाद में, अंत में, जब आप अपना एक आर्टिकल प्रेजेंट करते हैं जहां पर आप बताते हैं क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, कैसे और बेहतर किया जा सकता है किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्टिविटी को, आप अपना ओपिनियन जहां पर शेयर कर रहे हैं वहां पर उसे रिपोर्ट कहा गया है. सो एज डिस्कस्ड, there can be different types of report, right? There could be routine reports, there could be investigation based report, there could be technical report, there could be analytical report, there could be reports based on research, there could be report based on investigation, there can be reports even based on inquiry. So there are different types of report. I don't want to explain it once again because this you already this information is shared with you people many a time, and the presentation as well as the video is already uploaded on YouTube. I'll appreciate if you can watch that. Right now the focus should be on how do we write a good report. Good report लिखने के लिए किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए. फॉर्मेट नहीं बोल रहा है, फॉर्मेट हमेशा रिपोर्ट का एक पैटर्न है, उसी को फॉलो करना है. पहला चीज टेबल ऑफ कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद समरी प्रेजेंट होता है, समरी के बाद किस टॉपिक पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा, उस इंट्रोडक्शन के बाद आप मेंशन करते हैं कि
इंट्रोडक्शन जब हो जाए, जब आपने किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं. सो देयरफॉर इंट्रोडक्शन, डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट. ना हर एक रिपोर्ट के पीछे कोई ना कोई एक मकसद जरूर होता है, इसीलिए ध्यान में रखना है उसके ऑब्जेक्टिव्स. आप भूले नहीं, ऑब्जेक्टिव 2 से 3 होते हैं, 10-12 ऑब्जेक्टिव्स किसी भी रिपोर्ट का नहीं हो सकता. सो कीप योर ऑब्जेक्टिव्स minimal. Also understand why you are presenting the report, because report will help you to do the same activity in a better way next time. Say for example, this year you are organizing freshers party, and after the end of the fresher party, if you are presenting a report, in that report you are definitely going to talk about what went right, what went wrong. This report will help you next year to organize once again the freshers party in a better way. Why? Because you already have the report. Based on this report, you can identify what went right. You're going to follow the same thing. But what went wrong, जो ठीक से नहीं हो पाया, how to once again revise the idea, how to plan it, how to handle it, so that the same problem that we have faced earlier can be avoided or eliminated. हमेशा याद रखें, सिंगल माइंडेड रिपोर्ट को वैल्यू नहीं दिया जाता. हमें रिपोर्ट में अपने ओपिनियन के साथ साथ कई और लोगों के ओपिनियंस को भी डालना होता है. और ये सारे ओपिनियन आप कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? डेटा के. हमेशा याद रखें, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर कर प्रेजेंट करते हैं रिपोर्ट में, वो या तो प्राइमरी डेटा के सोर्सेस से होगा या सेकेंडरी डेटा सोर्सेस से. हमेशा याद रखना, हर एक रिपोर्ट में डेटा कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो 2 सोर्सेस से हो सकता है. पहला है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी, प्राइमरी compiles of all those information that could be gathered directly from the respondents. It could be through interviews, it could be through questionnaire, it could be through observation. जैसे अगर हम क्वेश्चनर की बात करें, या तो हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति से वो क्वेश्चनर देकर कह सकते हैं इसे भरकर दे दीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, सामने वाला व्यक्ति आपको आंसर दे रहा है, या आप ईमेल के थ्रू कई सारे लोगों को एक साथ क्वेश्चनर को शेयर कर सकते हैं. इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है. एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने डिसाइड कर लिया, सभी से उसी के क्वेश्चंस को, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसके जवाब के बेसिस पर आपने डेटा को एनालाइज किया. कुछ जगह पर बेस्ड ऑन द रेस्पोंडेंट अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. इन अलग अलग क्वेश्चंस को जब आप पूछते हैं, तो अलग अलग ओपिनियंस आपके पास आता है, जिसके बेसिस पर आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन, आप पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं. पार्टिसिपेंट का मतलब जहां पर आप उस चीज में इन्वॉल्व है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेशर्स पार्टी पर जब रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया, आप उस फ्रेशर्स पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग टीम के एक मेंबर हैं, तो आपने सारा काम किया है, आपको पता है क्या, कब, कहां, कैसे हुआ है, तो ये पार्टिसिपेटिव हो गया. अगर आप एक दर्शक के तौर पर, एक ऑडियंस के तौर पर आप बैठकर सारा इवेंट देख रहे थे, तब भी आप जान सकते हैं कि क्या ठीक से हुआ था, क्या खराब हुआ था. सो द अदर फॉर्म वेयर इन यू डिड नॉट पार्टिसिपेट will become non-participated. These all are primary way of collecting the data. But keep this in your mind, primary collection of data, very costly affair. It's a time-taking affair. So therefore, people, they always try to avoid collecting the data from primary sources, as it involves lots of time, it involves lots of cost. And again, data, wherever you are collecting, you have to take care of its storage. अगर आपने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, तो एक बार अगर डेटा आपसे मिसप्लेस हुआ, डैमेज हो गया, तो उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते. सो दीज आर द वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा दैट इज फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस. नाउ कम्स द सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्सेस आर लाइक फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम जर्नल्स, फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, from different articles. So these are those information which are already available
either in written form, hard copy as well as soft copy. जब डेटा कलेक्ट कर लिया जाए, आपको ये भी ध्यान में देना है, डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं बहुत सारा डेटा हो जाता है. What data to be included, what to be excluded. You have to be very cautious, very skeptical while adding the right piece of information, the right data in your report. Keep these things in your mind. Whenever we are writing report, the first and the most important thing is table of content. That should be very clear. अगर किसी को समरी पढ़ना है, किस पेज नंबर पर समरी है. अगर कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाह रहा है, कौन से पेज नंबर पर ऑब्जेक्टिव है. अगर कंपनी के बारे में कोई जानकारी लेना चाह रहा है, उसके इंट्रोडक्शन को समझना चाह रहा है, किस पेज नंबर पर इंट्रोडक्शन है. अगर कोई किसी डेटा को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो डेटा कौन से पेज नंबर पर अवेलेबल है, आपने कौन कौन से बुक्स को रेफर किया जिसे बिब्लियोग्राफी कहा गया, आपने कौन से वेबसाइट्स को रेफर किया जिसे वेबलियोग्राफी कहा गया है. तो इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है. हमेशा याद रखें, रिपोर्ट में भी पैटर्न वही होगा. पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कंक्लूड करते हैं. इस पैटर्न को भूलना नहीं है. हाँ, इंट्रोडक्शन कैसे होता है, समरी के तौर पर. समरी होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट. कंप्लीट रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इसे कहां से निकाला गया है, कहां से ढूंढा गया है, कहां से खोजा गया है, कहां से इसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपने एनालिसिस क्या किया और उसका एंड रिजल्ट क्या आया. अगर आपने इसे 500 वर्ड्स के अंदर में लिमिट कर कर लिखा है, sometimes abstracts are written only in 150 to 200 words. So this will help people to understand what exactly your report contains. Later on, once when they want to know more about the report, the details of that report, they can definitely read those papers, they refer those papers to know more about the report. So keep this in your mind whenever you are writing report. Table of content, very important. Writing a good summary, again, very important. Identifying objectives. I'm time and again repeating the same thing. Identifying objectives, very, very important. Apart from identifying objectives, it is again very necessary to know that whenever we talk about any kind of reports, there has to be proper introduction, explanation, conclusion. If there are any recommendations that are to be made, that should be included. References, which includes bibliography and bibliography, that has to be there. Now, coming into the main segment, when we talk about explanation, the first thing we understood is about the data. How do we explain about the report? Unless and until if we do not have the data, yes, it is very important to collect the data. After collection of data, the next process is you should know how to present your data. Data presentation matters a lot. And whenever we talk about data presentation, the most important thing is you should know in the data what are the important things that you're going to include. For example, inclusion of tables, inclusion of chart, inclusion of graphs. These are very, very important. Nobody would love to read hundreds of pages. If this hundreds of pages could be compiled in a systematic and an easy way through tables, go for it. अगर बहुत ज्यादा डेटा है और डेटा बहुत ही टफ हो जाता है लोगों को समझने के लिए, अगर वही टफ डेटा टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसे टेबल फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है. If you can present it in the form of charts, could be hierarchical chart, could be pie chart, go for it. If there are any graph wherein you want to compare last year का performance, इस साल का performance कैसा रहा, first sem का performance, second sem के performances कैसे रहे, और अगर आप इसे match करना चाहें, you should always go for a graph. Always remember, infographic matters a lot. So why do we use tables? Why do we use charts? What is the importance of using graph?
is very, very important whenever you are presenting any report. Gone are the days where people used to write 100 pages report, 200 pages report, and then nobody used to look into it. Because of technology and because of infographic, you can crisply, you can very precisely write your reports in the form of infographic, that is, presentation of the data इन एनालिटिकल फॉर्म जिसे लोग देखकर एनालाइज कर सके जैसे पाई चार्ट आप सबने पाई चार्ट्स का यूज किया है और पाई चार्ट परसेंटेज का किसी भी तरह के परसेंटेजेस को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है अगर बहुत ज्यादा नंबर्स है फैक्ट्स है फिगर्स है अगर उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर कंपैरिजन करना है एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ तो वहां पर आप चार्ट्स का प्रयोग करेंगे सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑल दीज keep always infographics in your mind. Infographic plays very important role and it should be properly utilized. So when you keep all these things in your mind, trust me boys and girls, you can present a very good report and your report is going to be one of the best one. So I want you all to revise once again proposal writing and report writing in a proper way. In case if you have any doubts related to the four concepts that we have studied towards, like that we had did in like that we believe I believe that was on 6th of April that we had our class. So if you have any doubts related to agenda, propose like minutes of meeting, notice writing, or memo, you can open up and you can definitely ask me those questions. So revise proposal writing, revise report writing. I've seen one more question that is frequently asked in the question paper related to testimony. Everybody, please pay attention to this particular term. Testimony says, if I have experienced anything, if I have gained some knowledge, if I have experienced something that is new, that experience, if I'm sharing with others, if I'm writing my experiences and sharing my experience with others, that is called as testimony. I repeat, testimony उसे कहा जाता है जहां पर आप अपने experiences को as it is share करते हैं. Feedback एक अलग नाम से जिसे जाना जाता है. कंफ्यूज मत होइए, फीडबैक को ही टेस्टिमोनी कहा गया है. तो अगर एग्जाम में फीडबैक का इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप सब ने फीडबैक का इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कई जगह पर पढ़ा होगा, एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को हमेशा ध्यान में रखना है. आप जब भी कोई भी प्लान, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, किसी भी तरह के एक्टिविटी में एंड यूजर्स, जब तक आप उनसे फीडबैक नहीं कलेक्ट करते, आपके लिए पता नहीं चल पाता है कि क्या आपने प्रोसेस को सही से अप्लाई किया या नहीं किया. सो अंडरस्टैंड फीडबैक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द सेम फीडबैक अगर आपसे आपके एक्सपीरियंसेस कोई पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन में कोई मार्क करे, उसे टेस्टिमनी कहा गया है. अभी भी अगर आपको टेस्टिमनी समझ में नहीं आया, आप किसी भी कॉलेज के वेबसाइट, आप आईएसएम पटना के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर टेस्टिमनीज आपको दिखेगा कि किस स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने क्या शेयर किया. दिस गिव्स अ गुड insight. When I use the word insight, that means right experiences in a right way. So people will get good experience. People will come to know about the product. People will come to know about the feedback right away, and they can take their decisions accordingly. So keep these things in your mind. So don't get confused. When you see a new word, you should not say, oh my God, this is out of syllabus. It's not out of syllabus. The only thing is you did not understand the synonyms. You did not go through the different synonyms by which the same terminologies can be utilized. So feedback, called as testimony, even in exam. And why feedbacks are very important? Because when we collect the data, we collect the feedback. And through feedback, we can come to know whether the proposal that we are sharing is good or bad.
The report that we have presented, whether it contains right information or not, whether the facts and evidences are really relevant or irrelevant, will it create any good impact on the life of human being or not? So there are not many things that you're going to come to know when you get the right feedback. For example, you're attending Niru's class, and if you are dissatisfied, unless and until I don't get the right feedback from you all, I cannot change myself. In order to change my methodology of teaching, I must get the feedback from you all. So that feedback that you're going to share to me or with me is called as testimony. टेस्टिमोनी ब्रेक कीजिए बेटा. टेस्ट और उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपका आ रहा है उसे जब आप प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, जो आपने वर्ड्स एक्सप्रेस किया, जब उसे कोई लिख कर प्रेजेंट करता है, इसी को टेस्टिमोनी कहा गया है. All right. So don't get confused. I have seen this question, so I thought let me explain to you all so that you should not get confused. So I once again will request you all to go through the notes related to proposal writing, related to report writing. In case if you have any doubts, don't hesitate in asking. Now I open up for the session wherein we can discuss about any doubts that you had related to proposal